Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Arsalan Siddiqui and I'm your functional English teacher and this is the, from the Department of Commerce, basically Dr. Sheikh University. And I hope that uh, my last lectures were useful to you regarding writing skills, particularly of letter writing, essay writing. And we are going to move towards more writing skills in upcoming days. I hope that you should be looking at this screen. It's more useful to you. And there are today I'm going to give you a little sort of exercise as well. But apart from that, I will also discuss the language used in letter writing. First of all, in the first 5 minutes talk, let's have a quick review of what we have done. In the last class, because it is the continuation and they are interwoven with each other, uh, we have discussed the letter writing. That why should we write letter, recipients, address, how to format a letter, what formats we should be following, what are the best ways to get on with letter writing. Okay. So what happens that when we start letter writing as a student of business, as a student of finance, we have to be. People expect us to be good at. They expect us to be the part of to be corresponding well. So it's people expectations because we have been studying business and business communication, functional English are the part of these courses. I told you that in the next class, in the upcoming classes, I will be having lectures on language, how we could go about language, what are the ways. So what are the ways and how this language is different from uh, letter writing or correspondence language. See, when you write an email, when you write even a small message in business settings, so your words are more powerful and they have a lot of influence. So if you are able to convey or choose appropriate words, then it is quite obvious that your message will be clearer and more impactful. But if your word choice is compromised, then obviously it will have bad impact on your personality and as well as on your organization. So your writing represents you and your organization. This is something you all need to learn, you all need to understand. However, what happens that let me see your question. Okay, howsoever, the things are different in a different scenario. Like, if you are writing an informal letter, then obviously your choice would be different. If you are writing a formal letter, you'll make a different choice. Now, today, I'm going to discuss with you. In the last class, we discussed the nature of letter, formal, semi-formal, and informal. Okay. Uh, Formal situations are commonly comprising office, school, academics, business, official correspondence, government correspondence. They are all known as formal language. However, in semi-formal, if a customer replies to the company, then it's obviously semi-formal. Sometimes we write complaints to our UC councils. We write appreciation letters. They are semi-formal, and sometimes within the organization there are semi-formal messaging, which are known as informal channel messaging, like greetings, like condolences, like unofficial, in official notices, but they are for unofficial work. So they are known as semi-formal letters, semi-formal formal correspondence. Second, we have uh, informal. Informal means friends and family, public letters, and personal writing, diary writing, and all these things.
Here, the rules of a language are not as religiously followed as other two are, because they are just simple correspondence. I would use the word polyphonic and monochronic. There are two kinds of culture: polyphonic cultures and monochronic cultures. So, if you get into this detail, you will learn a lot about letter writing, because it's important that we should know that what kind of culture we are doing our communication in. However, uh, what happens that when we write anything, any piece of thing, we need to put ourselves in others' shoes. The first thing we write, the consideration is more important. In the earlier class, I also discussed with you the types of letters that there are: thank you letter, apologize letter. They are. Now I'm solely talking about formal writing. The formal writing of letter, the most important part of letter writing is purpose. That what purpose are you writing? Today, inshallah, I'll be formatting a letter with you on a block format so that you can understand that how we would be writing. So the purpose is the most important thing. Then there are certain ingredients, the parts of the letters which are either mandatory or uh, not compulsory, but they may help you add more information. Then comes to the choice of a words, that what choices we should make while we are writing. So first have a look at that how we should be formatting letter. Since in our academics we are strictly write a letter with address of the recipient. So the first thing, a lot of people write to first and उसके बाद comma लगा देते हैं. They're wrong. This practice is wrong practice. पहले तो आप इसको देखिए, comma नहीं होगा इसमें. दूसरी चीज ये है कि this is also called an old practice. अब आपको टू लगा हुआ लेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस होता है कि जिसका एड्रेस आया हुआ है वो एड्रेस हुआ हुआ है, तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं. So make sure that you don't have to do this. Here we go. What to do? So first we write the address. For example, the person you are writing. If you know the name of a person, you can write the name of a person. That's not a problem. You know the address. For example, the principal of being commerce, Department of Commerce, भी कर सकते हैं. Then SUL. Energy Bhutusha University. I'm not writing it wrong. You can put down here commas if you don't want to. It's okay. But the last, you are not writing K here, and write Karachi here. This is what we call the address. You enter one time, you enter second time. Here you write subject. Subject should not be more than 7 words. A lot of people write the complete whole line. No, you don't have to write this. You just have to write what you are trying to say. For example, picnic 2000. Either you wanted a permission, slash, it could be, online exam criteria. You want to know the criteria, so
So just put down the heading, whatsoever heading you want, make it precise and to the point. Don't write application for exam, online criteria, letter for, request for, warning. No, you don't have to do this. Subject only deals with the topic, the main idea that you are representing. This is a problem that it's not together. We should remove and should have at least 12 font because 12 is an option font and Calibri and Times Roman. These can be two. Okay. Then one more time enter, and this is called salutation. Dear sir, dash madam, whosoever you are writing, semicolon or comma can serve best. No problem with that. Now here there is issue. You must listen to me carefully. If you know the designation of a person, for example, dear manager, dear customer care service, dear editor, and you should be writing there because it is a formal. There is not an informal and it's not inappropriate. It's completely appropriate. But you can also address directly the name. But if you know the name of a person, then you would write Mr. or officially Miss. When you write this, remember this. You have to write only the last name of a person. Uh, Pardon my typo. It's bad. So last name. Last name is, for example, we have here Mr. Ali. Name is Nisar Ali, but we'll be calling Mr. Ali. Salim Siddiqui, we'll be calling Mr. Siddiqui. The name of a girl is Farhat Naz, we'll be calling Ms. Naz. On. So whatever, we are going to be calling them with their last names. That's the formal attitude. Okay, if we are choosing Mr. and Miss. But if we don't know their names, then it's okay. So there are two kinds of salutation. We can also add their here. We don't think about it that we cannot hear there. There, Mr. And in some semi-formal, you can directly call sir, ladies and gentlemen. If the audience is unknown or audience is in huge number, then ladies and gentlemen, then staff, then teachers, then students, you can call, you can use any. Salutation is the mandatory part. Remember this. Here, subject picnic is not mandatory. Remember this. However, in Pakistan, government offices, it is mandatory. It's a part of their format, but actually it's not. So here we have. Now, after that, when you're done with this salutation, it is known as salutation. Add comments here. Okay, comment here. Here, subject. Um, that's three. Okay, so here we go. There are two things. Now, since it is a block letter, you just pray enter and you're going to start writing here. And the first line I told you that in formal writings is always what? It's always
the purpose line. The purpose line refers to two things. For example, I, Muhammad, sorry, am writing this letter on behalf of my class batch 20. Then go on. You just go on to अभी आ गया purpose line जैसा कि purpose line is usually written in uh, it is written with infinitives, gerunds, like to discuss. Okay. So uh, there can be many infinitive words. So you can add now. For example, I Muhammad am writing this letter on behalf of my class batch 2020 to complain, to request, to discuss, to highlight, to point out, to uh, to plead, to extend, whatsoever your purpose is, you write the purpose. Now we can see the language of here. Here we go. The another file. This is now these are the expressions. They may help you. Let me add it to. Yes, there you go. Can you see them? Sorry, let me get back to the better one. Better. There we go. Yes. So if you want to apologize, this is called, from informal to formal. Yeah, it's quite informal. Now we are moving towards semi-formal expressions and then finally formal. Please expect, uh, इसको कर देते हैं accept. I'm writing this letter to express my sincere apologies. Sincere. Yeah, I would like you to accept my sincere apologies. Acha. I'd be grateful if you could. I'm writing because of I'm writing to say to express my gratitude. Okay, the reason for writing this letter. Let me add a few more expressions here. Here we go. These are the words that I this one, the ones I highlighted. You could see them. I'm writing to inquire about. I'm writing in connection with. I'm writing to inform you. You could also say purpose of this letter is to inquire about. Similarly, if you are writing a response, I'm writing this, this in response to.
Yeah, in response with, in response to, you can add many expressions here. And if you want to reduce subjectivity, now there comes a good question. Uh, a lot of your business say that you cannot add subjectivity. You cannot add your name I. So it's better to be objective in which we reduce I and we write, for example, this is to the purpose of this correspondence is to, अगर एक पर्पस है तो is to, और अगर दो से ज्यादा है तो are to, और फिर आपने वो दोनों पर्पस डिफाइन करना है. ये एक और है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट. कंप्लेन में बहुत अच्छा यूज होता है. आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सीरियस कंसर्न. Okay, so these are the expressions. I regret to advise you. Good news, then again, I'm pleased to inform you. I'm delighted to tell you that I'm happy to advise you. For example, many times the students, they have done their projects and they have to write a small letter to inform their deans about their success or their visits. So they say that I'm delighted to inform you that. So the choice of word depends on how much you are, uh, how much feelings and emotion you want to put in. Even the formality of letters contains uh, type of expressions or emotions that you choose to write. ये भी सही है, this is due to, this is because of, this is a result of. अच्छा, अब आ जाते हैं हम वापस अपने लेटर फॉर्मेट पर. ये तो हो गया हमारा, हमने लिखना शुरू कर दिया और पहला जो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ होता है दैट डील्स विद द पर्पस, उसमें हमें पर्पस लिखना होता है, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. पर्पस एंड इंट्रो. Intro depends on, you can introduce yourself, who on behalf of you are writing. You can introduce, you can do many other things. Okay, so purpose and intro is here. Acha. If you are, for example, writing different paragraphs, let me uh, check if I can have. I want to look for some specimen to you. Got a lot of letters written here. This letter, characteristics of a, a, style. Okay, that's a different story. We'll be talking. If you have the course of this communication, then
I'm looking for some specimen that I can add to your. These are the yes, at the end of the session today. I'll give you some questions. Yeah, there we go. There we are. This one is informal. Tutor is semi-formal. I can have formal. Right now, I don't know why I'm not getting this. This is one of my favorite, handout that I'll be sharing with you. It has some words. Okay. Meanwhile, we have a search. We'll get back to our letter document. We're writing the first paragraph. For example, we write some paragraph. Okay. Here we have full stop. Now, what do you have to do? You have to just press enter and one more time enter. So after every paragraph, you have to give a space of one line. Okay, and then in the second paragraph of every essay must be a detailed one. That should contain the reason. That should contain what you are trying to say, what your purpose of the writing is. What what you have to say. Uh, what is the detail behind it? So you just write your purpose. For example, as a matter of fact, we have been planning to go on a picnic. Or, as a matter of fact, our class has been confused about online examination criteria. There are a lot of questions. Unfortunately, they haven't been replied on messages. Teachers are also helping us. So you need to be buffering as well. Okay, buffer जरूर create करना है. Even if अगर कोई conflict है, तो वो conflict भी आपने इस तरह define करना है कि जैसे आप जो है वो क्योंकि बफर से ये होता है कि आपकी लैंग्वेज पोलाइट हो जाती है और सामने वाला जो होता है दे विल बी इन बेटर पोजीशन टू रिप्लाई टू यू एंड दे विल बी सिंपैथेटिक इनफैक्ट एम्पैथेटिक टू यू एज वेल. अच्छा, अब आपने सारा ये लिखना शुरू कर दिया, आपने अपना पूरा पर्पस लिख दिया एंड व्हेन यू आर राइट. ओके, आपने इधर भी ये किया कि दो ये स्पेस दिया, दो दफा एंटर किया और ये जो लास्ट पैराग्राफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ होता है. इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और ये रेजोल्यूशन पैराग्राफ कहलाता है. पहला पैराग्राफ क्या कहलाता है? पर्पस. दूसरा पैराग्राफ कहलाता है डिटेल डिटेल्ड इन्फो एंड रीजंस. आप अपने रीजंस और अपने इश्यूज को डिफाइन करना है, कहलाता है. और थर्ड पैराग्राफ जो है हमारे पास वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट या रेजोल्यूशन पैराग्राफ. रेजोल्यूशन इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं और और जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम भी उसका सोल्यूशन प्रपोज करते हैं या हम उसको अदरवाइज बात करते हैं कि इट इज दैट, इट इज दिस. हाँ, यानी अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है ताकि सामने वाले को आप सोल्यूशन दें.
यूजुअली ये पैराग्राफ इस तरह स्टार्ट होता है कि हैंस, ज़्यादातर ये वाले कनेक्टर यूज होते हैं। हैंस एज अ रिजल्ट देयरफॉर आई वुड लाइक you to take some required or designated actions. अगर आप रिक्वेस्ट किए तो आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू माई रिक्वेस्ट, योर इमीडिएट रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इस तरह करके आप एक्सप्रेशंस यूज करते हैं और आप बताते हैं कि वो टेक सम एक्शंस। अच्छा, अगर कंप्लेन होता है तो आप थोड़ा सा सख्त हार्श भी हो सकते हैं कि वेल आई वुड लाइक यू टू टेक सम रिक्वायर्ड एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, ASAP। ASAP नहीं लिखना है आपने, आपने कंप्लीट लिखना है। तो आप जो है वो एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप थ्रेट भी कर सकते हैं। आई वुड बी लाइबल टू टेक एनी लीगल एक्शन, या आई वुड टेक दिस मैटर टू द कोर्ट, I would be going to the higher authorities. So you just give the sense that sense of urgency, sense of necessity, sense of seriousness of this issue. ये एक्सप्रेशन भी होता है। अगर मेरी आप एक्सप्रेशन की लिस्ट देखें तो उसमें है कुछ यस। अच्छा, ये राइटिंग के आखिरी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन होती है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये भी होता है। सो एवरी टाइप ऑफ लेटर जो है वो आप डिफरेंट टाइप के लेटर्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट, ये पैराग्राफ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद जो है आप चाहें तो आप क्लोज कर सकते हैं, और क्लोज के लिए भी आपने एड में लिख दिया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग। अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, मुझे याद रखिएगा। कॉमन एरर होता है बच्चे जो है hearing from you. I'm looking forward to having positive cooperation. I want to have your questions. I cannot see your questions. Walaikum assalam. And I want people, more and more people, to be online so that this session can become interactive. Because last time when I was having lecture, there were students who were active asking questions, but today I didn't see anyone. अच्छा, फिर ये थर्ड पैराग्राफ हो गया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री और रेजोल्यूशन पैराग्राफ कहलाता है। रेजोल्यूशन या रिजॉल्व देता है। ये सारा देखें, आप देखें ब्लॉक लेटर पे ऑटोमेटिकली होता है। कंप्यूटर की वजह से ब्लॉक लेटर दुनिया में पॉपुलर हुआ। पहले ये अमेरिकन फॉर्मेट चलाता था, फिर पूरी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, अभी मैं एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड। ये जो एरिया है ये कहलाता है क्लोज, जो अब मैं लिख रहा हूँ। पहले तो योर्स की स्पेलिंग देख लें, YOUR, कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आती। योर सिंसियरली, और आप सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। दोनों में कॉमा है, लेकिन सिंसियरली कब आता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने ऊपर डेजिग्नेशन को एड्रेस किया है, अगर डेजिग्नेशन को एड्रेस किया है तो फिर आप लिखेंगे YOUR is yours, FAITH faithfully, और yours truly। वाइस वर्सा हो जाता है, truly yours भी कर सकते हैं, faithfully yours भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को पर्सनली एड्रेस किया है, यानी नाम से एड्रेस किया है, तो फिर आप लिखेंगे sincerely
योर्स या योर्स, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप नेम से एड्रेस कर रहे हैं तो सिंसियरली, और अगर आप डेजिग्नेशन से एड्रेस कर रहे हैं या अननोन पर्सन है तो फिर योर्स फेथफुली या योर्स फुली। एक और एक्सप्रेशन होता है कोर्डियली योर्स और योर्स कोर्डियली। ये ओल्ड हो गया है, ये अंग्रेज अभी से इस्तेमाल नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ जो है वो 200 साल पुराने हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस अभी तक है हम पर, तो हम यूज करते हैं। दैट्स नॉट वेरी कॉमन कॉर्डियली यूज, और वो तभी तो बहुत टू फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशंस फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल होते हैं। एक और एक्सप्रेशन होता है जो कि सेमी फॉर्मल होता है, वो होता है रिगार्ड्स। ठीक है, एस के साथ होता है रिगार्डिंग, रिगार्ड्स। रिगार्ड्स जब आप लिखते हैं तो ये एक सेमी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में चल जाता है। और इसमें जो है आसानी ये होती है स्टूडेंट को कि चाहे आप नेम से एड्रेस करें, चाहे वो डेजिग्नेशन से एड्रेस करें, रिगार्ड होते हैं। लेकिन रिगार्ड्स की कुछ कंडीशन है। रिगार्ड्स के बाद आप अपना फुल नेम लिखेंगे, सब में लिखना है आपने, इसमें भी लिखना है आपने फुल नेम। सही है, फुल नेम। फुल नेम के बाद आपने कैपेसिटी लिखना जरूरी है रिगार्ड्स में। नेम, सिग्नेचर। यहाँ पर अगर आप नेम और सिग्नेचर भी लिख के छोड़ देते हैं कोई इशू नहीं। कैपेसिटी का मकसद क्या होता है भाई? कैपेसिटी कहते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के तौर पर लिखेंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन बता देंगे। अगर आप रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट लिख देंगे। कैंडिडेट है तो कैंडिडेट लिखेंगे। एप्लीकेंट्स है तो एप्लीकेंट लिखेंगे वर्ड। अगर आप पैसेंजर हैं, आपने कंप्लेन की एयरलाइन को या रेलवे को, तो आप एज पैसेंजर लिखेंगे। ये कहलाती है कैपेसिटी। सीईओ है तो सीईओ, तो अपनी कैपेसिटी लिखना जरूरी होता है। ये जो रिगार्ड्स वाला है इशू है, इसमें कैपेसिटी लिखना मैंडेटरी है, लेकिन सिंसियरिटी में और फेथफुली में आप जरूरी नहीं है कि आप लिखें। लेकिन ज्यादातर आप सिंसियरली योर्स या फेथफुली योर्स रहिएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंसियरली में अगर आप नेम यूज करना चाहते हैं तो आप उसे सिंसियरली लिखेंगे, और अगर आपने डेजिग्नेशन से एड्रेस किया है तो फिर आप फेथफुली। अच्छा, जब आपका नेम, सिग्नेचर और कैपेसिटी आ जाएगा, यानी आपने किस कैपेसिटी में लिखा होगा वो आ जाएगा, उसके बाद आप डेटेड भी कर सकते हैं। अच्छा, डेटेड यहाँ पे भी हो सकता है, एक लाइन छोड़कर इंटरप्रेट। एक, नंबर वन, और डेट यहाँ पे भी आ सकती है। देयर आर टू प्लेसेस वेयर यू कैन पुट डेट एज यू विश। अब यहाँ पे आपका लेटर पूरा होगा, लेकिन एक चीज जो है वो लेटर के अंदर रह गई है। जी जी बिल्कुल, आप नेम लिख सकते हैं। फर्स्ट में अपना पूरा नाम, जो पर्पस में होता है ना, मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्टिव पर्पस होता है और एक ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है। सब्जेक्टिव में आप, जैसे आपका सीआर लिख रहा है कि आई, मैं भूल रहा हूँ नाम, मेरे पास अली नाम है, आई अली राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास। मैं लिख रहा हूँ आई मोहम्मद अरसलान सिद्दीकी राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग दी कंडीशन। ओके, तो ये चीजें जो है आप कर सकते हैं। लेकिन एक एक होता है जो कंपनी आपको अपना नाम यूज नहीं करने देती, जो आप कंपनी की बिहाफ पे लिखे होते हैं, तो फिर जो है
वो जो है क्या नाम है, then you have to write serious like this letter is the letter, the purpose of the letter is subject to date. अगर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वो होती है p डॉट s डॉट पोस्टल स्क्रिप्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो कि राइटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने देना उसी को ही है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप वन लाइनर मैसेज जो है ऐड कर सकते हैं p डॉट s डॉट। है फॉर्मली तो आप पोस्टल स्क्रिप्ट, तो आप पोस्ट स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ओके, और यूजुअली इट्स वन लाइनर, ज़्यादा लंबा नहीं होता ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट को, पोस्ट स्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया कि सर फाइंड द अटैच्ड, अगर पिकनिक है तो मैंने बता दिया अटैच फार्म हाउस डिटेल्स व्हिच वी हैव लुक फॉर। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सर वी वांट योर फाइनेंशियल कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड एज वेल। ये भी हो सकता है। So you can add post scripts in different ways. So I hope that आपका लेटर राइटिंग का ये जो फॉर्मेटिंग है, आपने ब्लॉग रखना है, इंटरनेशनली ब्लॉग रहता है, मॉडिफाइड या सेमी ब्लॉग पे जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहले एक को पक्का करें। जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन या आगे राइटिंग के कोर्स करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपका एक्चुअल जो इशू है वो लैंग्वेज होना चाहिए कि आपने लेटर स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, लिखना क्या है और किस तरह उसको अकोमोडेट करना है। मैंने आपको बता दिया एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, ये बहुत अहम है। सैल्यूटेशन के बगैर कोई लेटर नहीं हो सकता। बॉडी, बॉडी के अंदर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, देखें ये सैल्यूटेशन आ गई। मैंने बता दिया था कि अगर कौन सी सैल्यूटेशन पे कौन सा क्या होता है। फिर आ गया पर्पस एंड इंट्रो, डिटेल एंड रीजनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ एंड रेजोल्यूशन और रिजॉल्व ऑफर करते हैं आप, एंड देन कम्स दी क्लोज। ये आपका हो जाती है क्लोज or complementary clause, and clause depends on your salutation. Here we are. Then we can put date. If we haven't put date up above, we can put the date, and we can add an additional message in postscript PS. Okay, I hope that you have learned to format and you've learned to start writing your letter, and you should be writing this letter. For example, ये last में मैं दे रहा हूँ आपको एक letter, आप इसको लिख सकते हैं as an assignment, as a practice. Let me share with you. इसको मैंने हाईलाइट कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। ये देख लें आप, then we'll finish the class. You recently stayed in a hotel in a large city where the weather was very unusual for the first time of the year and heating cooling system in the hotel was quite inadequate. Write a letter to the manager. अब नेचर क्या है लेटर की? मैंने आपको बताया था ना कि पहले नेचर देखते हैं, फिर हम देखते हैं टाइप क्या होगी, फिर हमें देखना होता है कि हमें क्या पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। ओके, जैसे कि नंबर 1 लेटर है, इसकी नेचर है फॉर्मल, कंप्लेन लेटर है और 3 पॉइंट्स है। और आपको पता है कि आपने मैनेजर को लिखना है, तो यू डोंट नो द नेम ऑफ अ मैनेजर, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे मैनेजर, डियर मैनेजर, डियर सर करके, और फिर आप करेंगे। सही है। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दैट यू हैव learned some letter writing. I tried my best to convey this, and I would welcome your more questions in the next session, because next section is going to be about 6 C's of communication in writing. एंड आप पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैं भूल गया था आप लोगों को ऐसे राइटिंग की
और लेटर राइटिंग की ये दोनों जो है आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, पीपीटीज भी और ये वाली डॉक्यूमेंट भी। तो दिस विल बी हेल्पिंग यू एज वेल। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल लेक्चर्स हैं मेरे, वो भी मैं आपको उसके लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप जो है वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।